dear students, how are you all? I wish always be well. In today's video, we will discuss about Newton's third law of motion and also about impulse and also about conservation of momentum, law of conservation of momentum. Okay, so be ready with your pen and copy and let's do it. Okay, so see what is impulse. You have seen when you want to kick a football with a large force, what you does, you just your contact with that football and your foot is very small, that for very small time interval. And also you have seen when you push a ball, when cricket player plays bat and ball, then the contact between the ball and bat is very small time. Okay, so that there is a large change in its momentum. So what is the fact behind that? That is the reason explained by the impulse. Impulse is what? First of all, you will write definition, and after that I will explain how it happens. Okay, so now what is impulse? Impulse is, it is total impact of force. It is defined as, you can write, it is defined as total impact of force. Okay, so what is that? So mathematically you can write, which is impact of force, which is equals to change in momentum. It is also defined as product of force and short time interval for which force act. Okay, so what is impulse? Impulse is defined as the total impact of force, which is equals to the change in momentum, and it is also defined as the product of force and short time interval for which it acts. For example, as I told you, in our daily life, we are doing all those things, but we are not knowing the fact behind that. For example, when you kick the football को kick करते हो, तो कैसे किक करते हो? पैर को पीछे ले जाके एकदम जोर से किक करते हो, and for very short interval of time. अगर फुटबॉल को तुम देर तक कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा, उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा. यू कैन एक्सपीरियंस बाय डूइंग दैट. ओके, तो तुम करके देख सकते हो कैसे. अगर तुम फुटबॉल को सेम फोर्स के साथ, जितना तुम्हारे पास फोर्स है उतना फोर्स के साथ तुम उसको बहुत देर तक कांटेक्ट में लेके पुश करो, और अगर उसको शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उसको कांटेक्ट में ले आओ तो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा. जैसे कि दो व्हीकल्स जब कोलाइड करती हैं, व्हेन दे कोलाइड ना, तो तुमने देखा होगा अगर वो दोनों सेम पूरा स्पीड के साथ एक दूसरे को पुश कर रही है, ठीक है, ये इधर से व्हीकल है, ये इधर से व्हीकल है. ओके, सो बोथ आर पुशिंग ईच अदर विथ अ लार्ज फोर्स ना, सेम, ठीक है, उस फोर्स से इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, उन दोनों के कंडीशन के जो मोमेंटम है, जो सिचुएशन, उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर दोनों व्हीकल विद द सेम स्पीड विद द सेम फोर्स अगर कोलाइड करती हैं अचानक से शॉर्ट टाइम के लिए, तो क्या होता है, दोनों इधर से उधर जाके गिर जाती है. ठीक है, बिकॉज उसके मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया. क्यों? बिकॉज द फोर्स एक्ट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. अंडरस्टूड? अगर कोई फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, अगर 10 न्यूटन का ही फोर्स तुम लगा रहे हो देर तक के लिए, तो वो फोर्स कम इफेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू अगर बहुत देर तक उस फोर्स को अप्लाई कर रहे हो तो. ठीक है, तो शॉर्ट इंटरवल इज बेटर देन the that type of force which we apply for short interval. That type of force is known as impulsive force. उस force को क्या बोलते हैं? Impulsive force. Okay,
जो फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए लगाया जाता है, जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो यू हैव सीन कि जब वो क्रिकेट प्लेयर बॉल को तो बैट को ऐसे पीछे लेके जाता है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बॉल आती है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उसको कॉन्टैक्ट में लाता है, वो क्या करता है बस ऐसे टच कर देता है, स्पीड में कोई बॉल आ रही है ऐसे टच कर देता है और वो बॉल किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाती है। अगर वो उस बॉल को ऐसे लेके जाता वो देर तक तो क्या होता, वो बॉल ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा पाती। अंडरस्टूड? तो for if any force is working for very short interval of time, now that type of force is known as impulsive force. And what is impulse? It is the product of force and time. I will explain that how. You know, by Newton's second law, I'm going to write, you know, by Newton's second law, force is directly proportional to the rate of change in momentum. Change in momentum. Change in momentum, I have explained second law, so no need to write all these things. You know already, P2 minus P1. That is the change in momentum with respect to time. That is the impulsive force. Okay. This is the Newton's second law. Now force equals to what? You know, K into P2 minus P1 upon T. Now this K is 1, you know, by experiment it was found K equals to 1. In second law I have already explained, okay, about it. So force equals to P2 minus P1 upon T. So now see, this force into T equals to what? P2 minus P1. So force time force into T equals to what? It is impulse. It is impulse denoted by I. This I equals to P2 minus P1. Okay, so this I equals to P2 minus P2 minus P1. So impulse equals to what? Change in momentum. Okay, change in momentum. So same definition you have written, it is the total impact of force which is equals to the change in momentum. So same derivation you got, I equals to P2 minus P1, that is change in momentum. So impulse equals to change in momentum. So now see, if this time you can see from this formula only, from this formula, if this t is small, then definitely this value of force will be greater. Okay, so if the force is acting for very short interval of time, then definitely the impact of that force will be greater. Okay, if this time will increase, then definitely this total value will decrease. It means effect of that force will decrease. Understood? तो सेम फोर्स को तुम अगर शॉर्ट टाइम के लिए लगाओगे, ठीक है, कि टाइम देखो, सेम फोर्स को शॉर्ट टाइम के लिए लगाओगे तो क्या होगा, उसका चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू if you are applying for a long time. Okay, so we will solve some numerical based on this formula. Okay, I hope it is clear. If it is not clear, then you can ask for me in live classes. Now one question I am taking. One question is from your book. I am taking this question. देखो और भी एग्जांपल्स मैं तुमको बता सकती हूँ. फॉर एग्जांपल दैट यू हैव सीन दैट अगर किसी वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, इसको तुम किसी व्हीकल से इसको ब्रेक करना चाहते हो, ठीक है, तुम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये वॉल नहीं टूटता है, लेकिन उसको जब तोड़ना होता तो वो क्या करते हैं, स्पीड में व्हीकल को ला जाता है और उसको, ठीक है, उसको पुश किया जाता है, तो क्या होता है, ये वॉल टूट जाती है. तुमने देखा होगा कि जब कोई भी गाड़ी हो तेज से जाती है तो क्या होता है, उस पर वॉल पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. क्यों? बिकॉज दैट फोर्स एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट देन द इम्पैक्ट ऑफ दैट फोर्स इज ग्रेटर. अंडरस्टूड? या फिर तुमने देखा है जो वो उनको क्या बोलते हैं, जो ब्रिक्स को ऐसे तोड़ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाना, तो ऐसे ऐसे वेट करते करते और अचानक से उस पर फोर्स लगाते हैं फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम सो दैट इट कैन ब्रेक. अगर वो सेम फोर्स खूब जोर से उसको पुश करके लगाएंगे तो भी वो ब्रेक नहीं होगा. अंडरस्टूड? तो किसी भी चीज उसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं सो दैट द इम्पैक्ट ऑफ दैट फोर्स विल बी मोर. ओके, so I hope it is clear. I am going to write, it is not given, these examples are not given in your book. For your understanding I am explaining, only this derivation and the definition is given in your book. Okay, now one example I am taking. If
a force of 1000 Newton is applied over a vehicle of 500 kg, then for how much times the velocity of the vehicle will increase from 2 meter per second to 10 meter per second. Also find the impulse. Okay, so I'll find it. Now you know this formula. This formula I will use this one. Now you see, that force equals to, by Newton's second law, force equals to P2 minus P1 upon T. Okay, so now from here, force equals to P2 is what? mv, mass time product of mass and velocity. You have studied already that for momentum equals to what? Mass into velocity. So mass into final velocity means final momentum, P2, minus initial momentum, mass into initial velocity, divided by time t. For what time interval this force act. Okay, so now from here T equals to what? T equals to mv minus mu upon f. Okay, so m is how much? It is applied on a 1000 Newton force is there, and mass is 500 kg. So 500 into velocity is final velocity is 10 meter. So 10 minus mass is 500 again. Initial velocity is like this. Also you can write m common. So v minus u upon f. So m equals to 500 into v is how much? 10 meter per second minus u is 2 meter per second divided by force. Force is how much? It's 1000 Newton. 1000 Newton. So now you can divide it. 500, 2 is this one. Now 10 minus 2 is how much? It's 8. 8 upon 2. That is 4. 4 second. It acts for 4 second. Understood? Can you see this? 8 by 2, 4 second. Okay. Now I'll write this side. Now another thing asked in the question, that also find the impulse. Okay. Also find the impulse. So impulse equals to impulse equals to force into time interval for which it acts. So force is how much? It's a 10 Newton. 1000 Newton into the time interval is 4 seconds. You have already found 4 seconds. So that is equals to 4000 Newton second. Okay. So this is the impulse by this force. Okay. Now we will move for the next heading. That is what? Newton's third law of motion. So what is Newton's third law of motion? All of you know what is the Newton's third law of motion. For each and every action there is equal and opposite reactions. For example, you people know, if I will push this wall or
then what you will feel? You will feel that somebody is also pushing from that side. या फिर किसी को तुम hit करते हो. If I'm hitting this wall, then what you feel? Same force you will experience in opposite direction. जैसे मैंने इसको धीरे से hit किया तो हमको थोड़ा चोट लगा, हमने जोर से hit किया तो जोर से चोट लगी, है ना. तो ये क्या है? So for each and every action I am getting equal and opposite reaction. So what is that? Newton's third law says that, this law says that for each and every action, for each and every action there is equal and opposite reaction. For each and every action there is equal and opposite reaction. This is Newton's third law. So you will write it states that for each and every action there is equal and opposite reaction. So many examples you can see in your daily life. You have seen the propulsion of rocket. You are able to walk on the floor. How you are able to walk on the floor? You pushes the ground in backward direction. While walking, you pushes the ground in backward direction, na? And then you are able to move in forward direction because ground also applying the same force in forward direction. That's why you are able to move in forward direction. To move in backward direction, what you does? You generally applies force in forward direction so that you are able to move in backward direction. ठीक है. तो फॉरवर्ड मूव करना है तुम क्या करते हैं? बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड आल्सो पुशेस अस टू फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द सेम फोर्स. अंडरस्टूड? इन द सेम वे इफ यू वांट टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन तो क्या होता है? you apply simply force in forward direction. In the same way propulsion of boat also you have seen. The sailor applies force by his oar on water पे वो पुश करता है ना, फोर्स लगाता है in backward direction. Okay. Then the water also applies the force in forward direction on the same body. ठीक है. Means on boat जब तुम वो वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कर लगाता है तो क्या होता है? बोट इज ऑल्सो मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द एक्शन रिएक्शन. Okay, by the Newton's third law of motion. So if in the question asks why the boat can move in the forward direction, so तुम क्या बताओगे? By the Newton's third law of motion, that is due to action and reaction pair. Both are the action reaction pair. Action reaction pair means दो bodies जिन पे force लग रहा हो action और reaction अलग अलग. ठीक है. तो उनको क्या बोलते हैं? वो move वहाँ पे because of that, because of reaction force the boat is able to move. Okay. और क्या बोलोगे? Why a person can swim in water? So in the same condition for that also due to action and reaction क्या होता है? He pushes water in backward direction by his hand and feet and he feels that the water pushing the person in forward direction. ठीक है. वो water को push करता है in the backward direction. The person is applying force on the water and the water also applying the force on the person in forward direction. Understood? So because of action and reaction it is moving. Okay. And also you have seen the example of propulsion of rocket also. Rocket क्या करता है? The fuel burn inside the rocket और वो fuel क्या करता है? Force, वो जो rocket होता है वो force लगाता है in downward direction by the fuel और fuel क्या करता है? It applies force on upward direction. वो क्या करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो रॉकेट पे वो फोर्स अप्लाई करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन सो दैट रॉकेट कैन मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है. ग्रेविटी के अगेंस्ट वो क्या कर पाता है? मूव कर पाता है. अंडरस्टूड? इन द सेम वे यू हैव सीन द एग्जांपल आल्सो लाइक जब हम बोट से जंप करके उतरते हैं. ठीक है. तो तुम क्या करते हो? तो बोट तुम फील करते हो कि तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा गिरने जैसे जाते हो. हाउ? बिकॉज जब तुमने फोर्स लगाया बोट पे आगे जाने के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो बोट पीछे मूव होती है और तुम क्या करते हो? आगे मूव कर जाओ. ठीक है. सो इन द सेम वे बट फॉर एक्शन एंड ऑल्सो यू हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ बुलेट एंड गन. गन क्या करता है? व्हेन यू फायर रिकॉइलिंग, तुमने सुना ना रिकॉइलिंग ऑफ गन. व्हेन यू फायर द बुलेट तो क्या होता है? बुलेट मूव करता है. तो इन द सेम वे द पर्सन ऑल्सो फील्स
विद द गन जो होता है, गन जो पकड़ा होता है उसको फील होता है ना एक फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। गन क्या करता है, थोड़ा बैक मूव करता है, क्यों? बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन। गन अप्लाइज फोर्स ऑन बुलेट, सो बुलेट ऑल्सो अप्लाइंग द फोर्स ऑन गन, बट बुलेट बहुत ज़्यादा दूर मूव कर जाता है, बट गन क्या होता है, वो थोड़ा मूव करता है, क्यों? बिकॉज जो बुलेट होता है दैट इज लाइट वेट, है ना। यू नो फोर्स इक्वल्स टू व्हाट, मास टाइम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज व्हाट, कि किस एक्सेलरेशन, किस वेलोसिटी चेंज के साथ वो मूव कर पा रहा है। तो देखो मास जिसका ज्यादा है वो कम एक्सेलरेट होगा, और जिसका मास कम है वो ज्यादा एक्सेलरेट होगा। तो सिंस मास ऑफ द गन इज मोर एज कम्पेयर टू बुलेट, तो बुलेट क्या होता है, उसका मास कम होता है तो वो ज्यादा एक्सेलरेट होता है, लेकिन फोर्स दोनों का सेम ही है, ठीक है। इसका मास ये कम है, इसका कैपिटल मास ए है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंस गन क्या है, उसका मास ज्यादा है, और बुलेट का दैट इज लेस एज कम्पेयर टू मास ऑफ द गन, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मास कम है तो वो ज्यादा एक्सेलरेट होगा, मतलब ज्यादा तेज स्पीड से मूव करेगा, एज कम्पेयर टू ये क्या होगा, इसका मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि बोथ फोर्सेज आर इक्वल ना, फोर्सेज दोनों पे सेम लग रहा है, लेकिन मास जिसका ज्यादा है वो कम मूव करेगा, और जिसका मास कम है दैट विल मूव फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। Okay, so that is the condition for the action and reaction. So, and also one more thing you need to understand about the Newton's third law of motion. The body, the two bodies, action and reaction pair की जो मैंने बात की थी, there should be two bodies. एक एक्शन करे तो दूसरा रिएक्शन करे, ऑन सेम बॉडी का इट कांट अप्लाई, जैसे इट इज नॉट एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम जो बुक है वो टेबल पे रखा है, so there is the book is not having the action reaction pair। देखो बुक पे जो फोर्स लग रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ what it is kept on table, मैंने नॉर्मल फोर्स की भी बात की थी। वो क्या होता है, मैंने बोला कि अगर बुक ये पेन यहाँ रखा हुआ है तो बिकॉज फोर्स, ग्रेविटी फोर्स क्या कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो इसको नीचे गिर जाना चाहिए, ठीक है, बट ये गिर नहीं रहा है बिकॉज अ नॉर्मल फोर्स बाय माय हैंड इज एक्टिंग ऑन दिस पेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अंडरस्टूड। तो अगर बुक टेबल पे रखा है, तो बुक जो टेबल पे रखा है, द फोर्स, ग्रेविटी फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द मार्कर और ऑन द बुक, ओके, and normal force by the table on the same book is acting in upward direction. So जो force दोनों लग रहे हैं, action and reaction, both are on the same body, both are on the same body, that's why the book is not moving, इसीलिए हमें वो action reaction का कुछ resultant नहीं मिलता है। Another example of action reaction also, अगर टू पर्सन आर कोलाइड विथ ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते तो तुमने देखा होगा क्या होगा, वो दोनों ही एक दूसरे को फोर्स, जैसे वो कोलाइड किए तो उसको भी इधर फोर्स लगता है, दूसरे वाले को दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगता है, बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन। बट देर आर टू बॉडीज, तो उनको फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था। अभी हमने जो बोट और पर्सन की बात की थी, तो भी बोट और पर्सन दो बॉडीज थी। वाटर और बोट की बात की थी, देयर ऑल्सो देयर आर टू बॉडीज, one is applying action and another is applying reaction. So for Newton's third law, to apply the Newton's third law, there should be two bodies, that is action reaction pair. If there is single body on which action and reaction both are working, then it is not applicable. तो क्या होगा, वो बॉडी पे फोर्स एक्शन रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा और वो मूव नहीं करेगा। बट इस केस में एक्शन रिएक्शन पेयर में फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ओके। तो इसीलिए बुक में मैंने क्या बताया, कोई भी चीज़ रखी हुई है तो उस पर ग्रेविटी जो अलग है वो पेन पे फोर्स लगा रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, अप साइड में बाय द टेबल। बट फोर्स किस पे लग रहा है, बोथ केसेस में फोर्स मार्कर पे ही लग रहा है, बोथ केसेस में फोर्स बुक पे ही लग रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज नॉट understood. So I think it is clear to you all. Okay, these are the examples what I have explained, what I was knowing, और भी बहुत सारे examples हैं, but this video is already very lengthy, so I don't want to increase this time. So up to here I am finishing this video. अब कल से next video हम फिर से करेंगे, ठीक है, on the phenomena that is conservation of momentum, ठीक है, that is the last topic of this chapter, so that we will do, and numericals based on conservation of momentum also will do in the another video. That is very important topic because conservation numericals जो है conservation of momentum से आते हैं, so you can solve, you will understand in the next video. So I hope up to here it is clear to you all. अच्छे से पढ़ाई करते रहो, take care all of you. Okay, bye bye.